हेलो नमस्कार गुड इभिनिङ आज आज म तपाईँको साथमा भ्याक्सिन जस्तो अहिले कोभिड-19 को भ्याक्सिन एज यू नो इट स्टार्ट्स इन इन्डिया 16th of January and after that from 1st March for the general public, and there is some guidelines regarding the 45 to 59 with comorbidities, and then after that senior citizen they can take the vaccine. And now फ्रेंड्स कोविड भ्याक्सिन नर्मली दुईटा कोविड भ्याक्सिन छ इन्डियामा अहिले। उसमा वान इज नोन एज कोभिसिल्ड एन्ड एउटा छ कोभ्याक्सिन। कोभिसिल्ड जहाँ छ त्यो सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया एन्ड अर्को एउटा छ त्यो कोभ्याक्सिन द्याट इज भारत बायोटेकको। कोभिसिल्डमा जहाँ छ त्यो कोभिड कोरोना भाइरस को प्रोटीन पार्ट ओन्ली त्यो एडिनो भाइरसमा यो गरेर त्यो बनाउनु भएको छ त्यस्तो टाइपको यो भ्याक्सिन। एन्ड जहाँ भारत बायोटेकको त्यो कोभ्याक्सिन छ, कोभ्याक्सिनमा होल भाइरस किल्ड भाइरस त्यो इनएक्टिभेटेड कोरोना भाइरस त्यो उसमा लिनुभएको छ त्यो भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनमा। नर्मली यहाँ म्याक्सिमम अहिले जस्तो कोभिसिल्ड एन्ड कोभ्याक्सिन दुइटै चलिरहेको छ। नाउ some of the queries regarding the comorbidities को जहाँ त्यो अहिले रिसेन्टली त्यो एउटा यो आइरहेको छ कि जो कोमर्बिडिटिज हुनुहुन्छ उहाँको लागि मात्रै त्यो अहिले भ्याक्सिनेसन। सो हाउ यु नो कोमर्बिडिटिज एन्ड उसमा थुप्रै त्यो प्रब्लम भइरहेको छ। जस्तो गभर्मेन्टको गाइडलाइन छ देयर आर 20 डिजिजेस दिइरहेको छ फर 45 to 59 को लागि। देन आफ्टर द्याट इफ यु आर सिनियर सिटिजन देन नथिङ टु वरी, यु क्यान गो एन्ड जस्ट consult with the doctor. If any health issues, then you can consult with the doctor. Otherwise, for comorbidities, normally here we have to understand about the comorbidities. Comorbidities हो कि कसरी जो थाहा हुन्छ कि हो comorbidities. So comorbidities में normally कि अगर आपको एक बीमारी और उसके साथ एक और बीमारी हो गई, दोनों मे बी कि ये रिलेटेड हो या रिलेटेड भी हो सकती हैं, रिलेटेड या अनरिलेटेड। Simply means more than one illness or disease occurring in the one person at the same time. Suppose अगर आपको ब्लड शुगर है और उसके साथ हाइपरटेंशन है या बहुत सारे डिजीज है, तो उनमें 20 डिजीज गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया हुआ है। उनमें आपको जो मेनली जितना हमने भी देखा वो आपको याद करने में, उसमें जैसे हार्ट फेल हुआ है किसी का पहले, या ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट में ब्लॉकेज हुआ है या फिर लंग्स में या ब्रेन में, जहां पर भी अगर वैसा कुछ है देन, और अगर कैंसर के केसेस हैं, डिसेबिलिटी के केसेस हैं और आपका इम्यूनिटी अगर बहुत लो है, सो नॉर्मली उन केसेस के लिए उनमें ही कोमॉर्बिडिटीज किया जाता है। और उनके लिए भी आपको एक फॉर्म, अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आप अपना एक जेरॉक्स और अपना प्रिस्क्रिप्सन त्यो सबै लिएरै जानुहोस्। बिकज वहाँ जति बेला त्यो फर्म फिलअप हुन्छ उसमा त्यो लेखिरहेको छ अल द डेटा कि तपाईँ कसरी त्यो डिटेक्ट हुन्छ, कसरी डायग्नोज हुन्छ, वहाँ कि त्यो की प्रब्लम छ, तपाईँलाई कोमर्बिडिटिज की छ। सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हाँ, वान मोर थिङ इम्पोर्टेन्ट, इफ यु आर एलर्जिक, तो एलर्जीको टाइममा त्यो अलिक याद गर्नुपर्ने कस्तो टाइपको एलर्जी, त्यो डक्टरदेखि कन्सल्ट गरेर मात्रै त्यति बेला मात्रै भ्याक्सिन लिनुहोस् एलर्जी केसमा। और कोही छैन। बाँकी आफ्टर भ्याक्सिनेसन नर्मली भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन द हाइड्रेसन। वान मोर थिङ, इफ यु आर हाइपरटेन्सिभ, सो बिफोर गोइङ टु भ्याक्सिनेसन हाइपरटेन्सनको मेडिसिन अगाडि नै खानुहोस्, मर्निङ पनि लिनुहोस्, एन्ड बिफोर गोइङ टु भ्याक्सिनेसन जस्ट चेक योर ब्लड प्रेसर। देन आफ्टर कमिङ अल्सो you have to check your blood pressure and pulse rate. That's very important. And one more thing regarding the reactions, normally anaphylaxis normally, so just after vaccination, that's why there is half an hour observation time. अगर सपोज विदिन जस्ट त्यो भ्याक्सिन लिनु भयो भने इमिडिएट कोही एलर्जी कोही त्यो रेस्पोन्स आयो, जस्तो त्यो मेबी कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा या फिर रेस्पिरेटरी या फिर स्किन रिलेटेड एनी यो, देन इमिडिएट यू हेभ टु कन्ट्याक्ट, देयर इज अ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ऑल देयर. So that is anaphylactic reaction. That's all about the vaccine. And after vaccine also, the main important thing government ko jahan guidelines are, that is mask. That is very 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 important before after vaccination. So you have to wear a mask, proper masking very important. Suppose जैसे
मेरो यो छ मेरो केस म त नेचुरली इन्फेक्टेड पनि भएको देन आफ्टर द्याट भ्याक्सिनेसन अल्सो एन्ड सेकेन्ड डोज अल्सो एन्ड देन आफ्टर द्याट टुडे इज आई थिङ्क 22nd डे सो but still I am wearing the mask, so that is very important because vaccination is not the guarantee कि there is a confirmation of confirm कि तपाईँले त्यो फेरि कोभिड हुँदैन त्यस्तो कोही छैन एन्टिबडिज कति बन्यो के बन्यो त्यो सबैले चेक पनि गर्नु हुँदैन नो रिक्वायरमेन्ट अफ टु चेक द एन्टिबडिज बट मेन इम्पोर्टेन्ट यु हेभ टु बिलिभ अन नेचुरल भ्याक्सिन द्याट इज प्रपर मास्किङ second things if possible then distance maintain and hand hygiene. So that's very important, please, because now second wave again starts. That is very important. Now it's I am responsible. We all have to understand about our responsibility. We all have to save our family, save himself, herself, and our family and society. So please be careful. Try to understand. And one more very important thing, I think, if we understand one more thing, that is the self-denial. If we have any symptom, we don't have to self-denial कि मलाई त यस्तो टाइपको भएको छैन मैले त हिजो त्यो नआएको थियो हिजो यस्तो यो गरेको थियो कोल्ड ड्रिङ्क खाएको थियो द्याट्स वाइ इमिडिएट यु हेभ टु आइसोलेट एन्ड गो फर टेस्टिङ टेक consult with any doctor. That's a very important. So I think self-denial is very important because within 6 to 7 days, that is the main crucial time in COVID. So if suppose there is a very difficult situation, so if you have any symptom, immediate you have to isolate and consult with any doctor. Thank you so much.